आज पूरा 1 घंटा लाइव करेगा, पढ़ाई का साथ लाइव मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ देख लेना। नोटी एकदम पूरा नोटी रहेगा मेरा साथ, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई करेगा, थोड़ा बाहर में जाएगा, थोड़ा पढ़ाई करेगा, थोड़ा बाहर में जाएगा, ऐसे पूरा 1 घंटा बना देगा। और सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करेगा, 1 घंटा। 1 घंटा में क्या पढ़ाई होगा आप लोग देख लेना, ठीक है। ये लाइव प्रूफ है, एडिटिंग बेडिटिंग कुछ नहीं है, लाइव प्रूफ है। पूरा 1 घंटा में क्या पढ़ाई होगा देख लेना। 1 पेज पढ़ाई कर पाएगा ना 2 पेज, ये भी पूरा चैलेंज है। लेकिन 1 घंटा में जितना हो सके पढ़ाई करना कोशिश करूँगा। इकोनॉमिक ले लिया, अब उल्टा देखा देगा, शायद ऐसा उल्टा ही आएगा, पता नहीं। इकोनॉमिक के ये मेरे लिए बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बिजनेस का है फिर भी हार्ड सब्जेक्ट है मेरे लिए। इकोनॉमिक तो एक्चुअली पैसा का होता है ना, बिजनेस। जो लोग बिजनेस करता है वो लोग के लिए इजी है, लेकिन मेरे लिए बहुत हार्ड है। 1 2 3 स्टार्ट। ये नया है इसलिए कुछ नहीं खुला। अरे भाई क्या है, अरे सब ऐसा ही क्या। ये सबसे पहले ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना फोड़ना। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ये पूरा नया लाया है ना, इसलिए अभी तक देखो अभी भी इसमें मतलब मैं खुद तोड़ना पड़ेगा अभी। ए ओए राजू प्यार ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। ओ राजू प्यार ना करियो। अंदर हो जाता है ना, अच्छा अच्छा। चलो इश इश वो पूरा पेज ऐसा है पूरा ऑल पेज। ए साला पूरा सब पेज ऐसा हो गया, मतलब नया लाया है ना पूरा, कोई काटा ही नहीं। देखो मैं खुद अभी काटना पड़ रहा है, मेरा पास ब्लेड भी नहीं है, सीजर भी नहीं है। लाइक करो, लाइक लाइक।
लाइक करो भाई, लाइक। 1 घंटा लाइव करेगा पढ़ाई के साथ। लाइव प्रूफ है मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ। 1 घंटा में कितना पढ़ाई होगा आप लोग देख लेना। जो लोग पढ़ाई नहीं करता है वो लोग के लिए, जो लोग पढ़ाई करता है वो लोग 1 घंटा में कितना पढ़ाई होता है सभी को पता है। देखो 5 मिनट तो हो ही चुका है। ये नहीं होगा। कल सुबह, कल मॉर्निंग इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो आज अगर काटेगा तो टाइम चला जाएगा। अभी कितना टाइम हुआ? 7:57। अच्छा, 8 o'clock से 9 o'clock तक मैं पढ़ेगा। ये काटना ही पड़ेगा। 3 मिनट में शायद मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। 3 मिनट में तो नहीं होगा। इतना पूरा देर पूरा सारा अभी मैं खुद काटना पड़ रहा है। मेरा पास ब्लेड भी नहीं है, सीजर भी नहीं है। हो जाएगा। फिर कल के लिए ये सबको कल काटना पड़ेगा। इकोनॉमिक में तो सब मैच ही मैच। ओहो, ये मैच कौन करेगा? मेरा बाप। तेरा बाप। मेरा बाप तो नहीं करेगा, तेरा बाप करेगा। इकोनॉमिक क्या बोलता है? इकोनॉमिक क्या बोलता है? कहाँ है इकोनॉमिक का? इकोनॉमिक बोलता है, इकोनॉमिक राइटन बाय गोयल एंड गोस्वामी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। ओ, ये नहीं हो सकता। इकोनॉमिक क्या कहता है? लेट्स सी। वी आर प्लेस टू प्रेजेंट बिफोर यू द सेवेंथ थॉरली दैट। या में तो सब टॉपिक दिया गया है। August 15, 2023। Oh, economic is one of the social science which has lot of influence on every human being. इकोनॉमिक कहता है, देखो, इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सोशल साइंस। ठीक है, मुझे तो पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन पढ़ाई तो कर सकता है ना। समझ में नहीं आएगा तो क्या हुआ, पढ़ाई तो कर सकता है। ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा है मेरा कैमरा? कुछ तो गड़बड़ है क्या? थोड़ा आया क्लियर ना? लाइट उधर से आ रहा है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक कहता है कि इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सोशल साइंस विच हैज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग। Receive attention in the school India as economic life and the economic got change the इतना सारा कौन पढ़ेगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपिंग। चलो फालतू का बात छोड़ो। ये इधर पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है ना?
इससे आएगा तो आप लोग को दिखाई देगा था। लाइट ऊपर से आ रहा है ना, इसलिए कोई बात नहीं। कंटेंट कंटेंट देख लेना। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये वाला पहला पढ़ाई करेगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, distinction between microeconomic and macroeconomic, emergence of microeconomic, need for a separate study of macroeconomics for sector of an economy। तो सबसे पहले मीनिंग दिया गया है, ये रहा मीनिंग। इधर में मीनिंग लिखा था, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, मैं खुद पढ़ाई कर लूँगा। वैसा भी आप लोग के लिए नहीं है, मेरे लिए पढ़ाई करना है। आप लोग सिर्फ सुनना है और देखना है, ठीक है। लाइक नहीं कर रहा है, लाइक करो। Microeconomic, economic is the study how people, economic is the study how people, institution and society make choice under condition by the scarcity। कुछ समझ में आया क्या है, क्या बोला? Economic is the study how people, institution and society make choice under condition by the scarcity। Microeconomic is the study of individual economic unit of the economy, whereas macroeconomic is the study of economy as a whole and its aggregate and average of the entire economy। थैंक यू भाई, थैंक यू, लाइक किया है, थैंक यू। Such aggregate are national income, total employment, aggregate saving and investment, aggregate demand, aggregate supply। ओ हो, मुझे पता चला ये इकोनॉमिक क्या होता है। होल एंड एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ द इंटर इकोनॉमी। ये देखो इकोनॉमी के बीच में क्या है, नेशनल नेशनल इनकम, यस, टोटल एम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिमांड, सप्लाई, general price level, here etc। Here we study how this aggregates and average of the economy as a whole are determined and what case fluctuation fluctuation in them। और ये सब कैसे हमको पता ना चलो। जरा इधर से ऐसे आएगा, तब दिखाई देगा। हेबिरू हेरू 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 मेरू। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुका है। Having understood the determinant, the aim is how to ensure the maximum level of income and employment in a country। Since the subject matter of macroeconomics revolve around the determination of the level of national income and employment, therefore it is known as theory of income and employment। Besides studying the determination of the level of national income and employment,
Besides studying the determination of the level of national income and employment. It is known as theory of income and employment. इसमें बोला है इकोनॉमिक इज द स्टडी हाउ पीपल institution and society make choice under condition by the scarcity. Macroeconomic is the study of individual economic units of the economy, whereas macroeconomic is the study of economy as a whole and its aggregate and average of the entire economy. Such aggregate are national income, total employment aggregate, saving and investment, and demand and supply, general price level, etc. Agra bagra, agra bagra. Here we study how this aggregate and average of the economy as a whole are determined and what case fluctuation in them. Having understood the determinant, the aim is how to ensure the maximum level of income and employment in a country. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या पढ़ाई करूँ जोली लेबर ने बोला था क्या पढ़ाई क्या बोला था भूल गया Teacher studying the determination of the level of national income. The aim is how to ensure the maximum level of income and employment in a country. Since the subject matter of macroeconomic revolved around the determination of the level of national income and employment. Therefore, it is known as theory of income and employment. Therefore, it is known as theory of income and employment. Theory of income and employment. Employment. ये इकोनॉमिक पढ़ाई कर रहा था भाई इकोनॉमिक
ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई करो के थक गया। कैसे पढ़ाई करो, क्या पढ़ाई करो, मुख से बोल सकता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। Therefore, it is known as theory of income and employment. पढ़ाई करना तो मन नहीं है। मेरा कैमरा अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है रे। ऐसे होने से अच्छा होगा था, शायद दिखाई देगा। इधर से नहीं दिखाई देगा, इधर से दिखाई देगा। हाँ, समझ तभी आ गया जब फोन को साइड में रख के पता। हाँ, ऐसे करने से समझ में आया। हाँ, इधर से पता चल रहा है। लेकिन साला कैमरा कहाँ रखूँ मैं? मेरा फोन रखूँ तो रखूँ कहाँ रखूँ? हाँ, मुझे पता चला। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये मेरा पेन है ना, इसको अलग जगह में रखना पड़ेगा, ठीक है? अभी यार इसको भी कहाँ रखूँ? जगह ही नहीं है मेरा पास, टेबल छोटा है। रुको रुको, 1 सेकेंड। ये बैग इधर रख दूंगा, ये बैग इधर रख दूंगा, और इधर से कैमरा आएगा अभी। ये चला, पता चला मैं कल। ये मेरा कैमरा स्टैंड है, ये बुक, ये मेरा स्टैंड है। अब इसको ऐसे रखेगा, देख लेना कैमरा स्टैंड में कैसे बनाता है। इसको ऐसे रखेगा और ये पेन इधर आ जाएगा। इधर आ जाओ मेरा बेटा, और ये खूना में टू जा, और यहाँ में आराम से इसको ऐसे रखेगा और इधर से आएगा। अभी पता चलेगा मैं क्या करता है, क्या कर रहा है, आप लोग को भी पता चलेगा। अभी तू दिखाई दे रहा है ना, अभी तू दिखाई दे रहा है शायद। अभी भी नहीं दिखाई देगा। करूँ तो करूँ क्या करूँ? हाँ, दिखाई दे रहा है अभी। ओ, नहीं दे रहा है, क्या करूँ? हाँ, इधर से ऐसे ऐसे होने से देखा देता है। अच्छा, यहाँ में कुछ लगाना पड़ेगा हमको। ऐसा लगा दूँ, ऐसा लगा दूँ, नहीं चाहिए। अब ऐसे मुड़ेगा। पढ़ो, तभी पढ़ा जाएगा। उनको स्विच ऑफ कर, फोन स्विच ऑफ करोगा तभी पर। यार आपका टेक्स्ट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। फोन स्विच ऑफ करके न कर खा, पढ़ो तभी, पढ़ो तभी फटा जाएगा, पता जाएगा, क्या जाए, पता आएगा। यस, यस। साथ में अगर मोबाइल रहेगा तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी अगर फोन वहाँ फेंक देगा तो ये सब डायरेक्टली माइंड में आ जाएगा। फिर भी आज लाइव प्रूफ, लाइव प्रूफ देखा नहीं, इधर से अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, इधर ही रखना पड़ेगा। आज 1 आवर्स पढ़ाई करेगा,
only 1 hours. देखो एक घंटा में कितना पढ़ाई कर सकता है? लेट्स ट्राई. Okay, bye. Okay, bye. Thank you so much for watching. Besides studying the determination of the level, studying the determination of the level of national income and employment, macroeconomic also study how general level of price are determined. Also study the case, consequence, and remedies of inflation in macroeconomic. Another important branch of macroeconomic is the theory of economic growth, which is growing in importance day by day. The theory of economic growth has special significance in accelerating the tempo of economic growth of underdeveloped countries. Scope of macroeconomic. Macro Shit. बच गए यार. मैं मोचर मारने के चक्कर में मेरा मोबाइल अभी टूटने वाला था. In macroeconomic also study how the relative share of different classes, especially laborer and capitalists, are determined in the national income. This is called the macro theory of distribution, which determine the relative share of wealth and profit in the national income. Scope of macro theory of income and employment, theory of general price level, theory of economic growth, macro theory of distribution of. 1 second, guys. 1 second.
सिर्फ आधा घंटा हुआ है, अभी नींद आ रहा है। In microeconomics, the letter I stand for individual. Okay. I stand for individual. I stand for indi- I stand for individual. Example: it studies the economic behavior of individuals, and in macroeconomic, the A stand for aggregate. A stand for aggregate. Example: it study the economy as a whole. As a whole. राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हेलो भाई साहब, हेलो 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 हेलो, नींद आ रहा है मुझे तो, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। देख, microeconomic is the study of individual economic units of the economy, whereas macroeconomic is the study of economy as a whole, and it aggregate an average of the entire economy. Such aggregate are national income, total employment, aggregate saving and investment, aggregate demand, aggregate. What is called aggregate? Ah. Here we study how this aggregate and average we study
চোরার মন কিরকম চোরা কে টকিকে as a whole are determined and what case fluctuation in them उन लोग को कैसे fluctuation करेगा वो of the economy as a whole are determined and what case fluctuation in them कैसे fluctuation welcome to chat economic is the study how people Economic is the study how people, institutions, and society make choice under condition by scarcity. Microeconomic is the study of individual economic unit of the economy, whereas macroeconomic is the study of economy as a whole of the economy, where a macroeconomic is the study of as a whole and it aggregate an average of the entire economy. 41 minutes हो चुका है और 1 मिनट और 20 minutes. Bauni panti saina ade. What is a aggregate? मेरी दुनिया है पांच चैप्टर बहुत इजी है आज कंप्लीट करेगा 5 चैप्टर That's the difference branch of market.
basic microeconomic. Macroeconomic. Microeconomic is the branch of economic which study the behavior of individual unit of an economy. Macroeconomic is that branch of economy which study the behavior of aggregate of the economy as a whole. Meaning tools. Its main tools are the demand and supply of particular commodities or service. It aims of basic objective. It aims to determine price of a commodity or factors of production. Instrument price is the instrument to solve macro problem. Its main tools are aggregate demand and aggregate supply of the whole economy. It aims to determine economic and income and employment level of the economy. Income is the instrument to solve macro problems. Basic difference between microeconomic and macroeconomic. Difference between microeconomic and macroeconomic. Meaning, it microeconomic is the branch of economic which study the behavior of individual unit of an economy. Household, farms, and government are the microeconomic decision makers. Households, farms, and government are the macroeconomic decision makers.
मेरी दुनिया है। Macroeconomic is the branch of economy which study the behavior of individual units of an economy. Macroeconomic. Microeconomic is the branch of economy studies which is which studies the macroeconomic is the branch of economic. Microeconomic is the branch of economic which studies the behavior of individual units of an economy. Difference between microeconomic and macroeconomic. Meaning, microeconomic is the branch of economic which study people behavior, which study the behavior of individual, which study the behavior of individual units of an behavior of individual units of an economy. Macroeconomic. Macroeconomic is that branch of economic which study the behavior of aggregate of the economy, behavior of aggregate of the economy as a whole. Macroeconomic is the branch of economy which study the behavior of aggregate of the economy as a whole. Difference between macroeconomic and microeconomic. Meaning, Macroeconomic is that branch of economic which study the individual of unit of an economy, or study the behavior of individual unit of an economy. Macroeconomy is that branch of economic which study the behavior of aggregate, which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole. There are two main schools of economy thought: classical school and Keynesian school. According to classical economic like J.S. Mill, J.B. Say, T.R. Malthus,
An economy always functions at level of full employment due to free play of market force. In a free economy, all the workers willing to work get employment. All output products produce product produce is sold out. So farm operate at their full production capacity. Any deviation from the level of full employment will be automatically wiped out by the market force of demand and supply. Till early 1930s, classical doctrine of automatic full employment was largely accepted. Whole well, demand for goods in the market was low. Demand for goods in the market was low. Many factories were lying idle, output fell, and unemployment fell by half amount. In USA, from 1929 to 1933, unemployment rate rose from 3% to 25% and aggregate output fell by about 33%. Depression continued for 10 years and the economy did not automatically come to the level of full employment. The stock market crash on October 24, 1929 was the major event that marked the beginning of the Great Depression. Bank failures due to stock market crashes was another major case behind the depression. It was against this background that the well-known British economist J. M. Keynes propounded his own theory and wrote his famous book General Theory of Employment, Interest and Money. General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936, which brought about a revolution in economic thought called the Keynesian Revolution. Keynes created the classical reception problem development